Yes, dear students, once again, welcome to all of you. And I'm sure you must have enjoyed the last session. And in last session, if you remember, I gave you some questions and we discussed about the spherical mirrors. And what are the types of spherical mirrors and what is the another name of concave mirror and another name of convex mirror. So this all we discussed. Okay, and why do we call concave mirror converging mirror and convex mirror diverging mirror? This we discussed, and I told you that it is very important for exams. So you have to remember both names. Okay, and reason for why diverging and why converging. And I gave you some questions in last session. I am sure all of you must have done in your notebook, or you must have done in sheet and must have attached with the form. And हमने इसमें आपको नोट्स भी देते हैं एंड नोट्स भी आपने प्रिंट आउट ले लिया होगा बेटर है कि अवॉइड प्रिंट आउट एंड राइट इन नोटबुक क्योंकि वो ज्यादा अच्छा रहेगा इफ यू राइट इन योर नोटबुक हैंड राइटिंग विल आल्सो इंप्रूव so now question comes to us that what we are going to do now. So in this session we are going to discuss some terms related to spherical mirrors, some terms related to spherical mirrors. And these are very important because when we draw ray diagrams, so these terms will help. When we solve numericals, so इसमें कहाँ help होगी इसकी? So this all we are going to discuss. So now let's start the session here. So you can see here this is one sphere of which I have a B part, and this part has been cut and it is polished from outside. Silver polish इसको हमने कर दिया है. And this is the another sphere. आज हमने दो sphere ले लिए, एक ही से दो part ही बनाए. So इसका जो हमने लिया है and this part has been cut B and its inner side has been polished. इसकी inner side को polish कर दिया है. So now you can just recall. So now it has become converging mirror and it has become diverging mirror or convex mirror or it is concave mirror. So इसमें क्या क्या terms हम इसमें discuss करने आ रहे हैं and क्या importance है इनकी. So देखिए exam point of view से this is important because you can be asked questions related to this. You can be asked to define center of curvature. You can be asked to define अभी जो करते रहेंगे हम साथ साथ बताते रहेंगे. So first of all, you can see here C is written. So C is the center of the sphere. It is the center of the sphere. So every circle, every sphere, okay, it has a center. And this is the sphere, and we have got ABB part. ABB part. Okay, so ABB part is the part. ABB, it is mirror, spherical mirror, is a part of the spherical glass ball. And उस spherical glass ball का C क्या center है. So this is called, and this is curve also. In previous video, I told you, हमने इस तरह से diagram draw करा था, right? ये, so this is the curve. So this is the curve. So this is the curvature. Curve part is the part of hollow spherical glass ball. तो इसको हम कहेंगे center of curvature. इस curve का center, ये curve किसका part है? Curve part है hollow spherical glass ball का. So this is called center of curvature, and it is represented by C. Now, sir, how to define? So हम इसमें आपको explain करते रहेंगे, and just I told you, इसके notes आप हम बार-बार लिखेंगे नहीं, बार-बार erase करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. So you can write, and you need not to note down. आपको भी बार-बार इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो notes में मिल जाएगा. बीच में हम कुछ लिखते भी रहेंगे. So center of curvature क्या है ये? It is center of hollow. So hollow. This word is important. Hollow spherical glass ball of which spherical mirror is a part. Spherical mirror is a part, right? The spherical mirror, either it can be concave mirror or convex mirror. कोई भी mirror होगा, it is a part of the hollow spherical glass ball. So this is called center of curvature. Curve का center है.
कर्व किसका पार्ट है, ओके, किस होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल का पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने पी भी लिखा हुआ है देखिए, और ये ए बी बी ये पार्ट भी लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट, राइट। तो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप देखें, दिस इज द स्फीयर, and if I talk about this point CP is a radius, it is a radius of the sphere। तो हम चलते हैं, ये radius of sphere है, and if I join this here, I'm taking another color, so this is starting from here, yes, same way it is starting from here, I can join here, okay। So this is the AC, और ये here PC, it is a radius, you can see it is a radius joining the center to a point of the sphere। So it is the radius of the sphere hollow spherical glass ball। So it is the curve here, we can say CA or CP is the radius of curvature, radius of curvature। तो ये कर्व किसका पार्ट है, उसकी रेडियस क्या है स्फीयर की, that is called radius of curvature। तो here second is radius of curvature, radius of curvature, okay। So radius of curvature is here AC, we can say AC radius of curvature, or this is CP is the radius of curvature। So radius of curvature is the radius of hollow spherical glass ball, again hollow spherical glass ball of which the mirror is a part। So it is the radius of the spherical glass ball जिसका मिरर एक हिस्सा है, ओके। एनी प्रॉब्लम है, एंड यू नो ये इक्वल इसके हम मैच में करते हैं, एंड इफ आई ज्वाइन दिस पॉइंट, यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो ये तीनों इक्वल आते हैं, बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्किल क्या होते हैं, इक्वल होती है। कितनी भी रेडियस होगी सर्किल में ड्रॉ करें, सभी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। सो एनी डाउट हियर, इफ यू विश यू कैन राइट डाउन हियर, okay, done। Now next, the next point you can see here P। So what do we call this P? P is pole, P for pole। So P for pole here, so that is not a pole which is used for jumping, only। So pole here you can see it is the center, इसमें ये center is this glass ball का APB जो हमारा मिरर है, इसका जो सेंटर होगा, मिरर का जो सेंटर है, दैट इज कॉल्ड पोल। सो एज आई हैव अ मिरर, दिस इज yes, this part is bulging here, we can see from this side, and this part is it is just कैसा है, यहाँ से लास्ट टाइम हमने करके दिखाया था, ये बल्जिंग है, तो ये क्या होगा, थोड़ा अंदर से है, तो दिस इज पॉलिश्ड, ओके। सो इसका जो मिरर का जो सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट जो होगा, दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। तो ये जो पोल है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिमेंबर सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल। तो पोल क्या होगा, पोल इट इज द सेंटर ऑफ, यस इट इज द सेंटर और मिड पॉइंट of reflecting surface, it is the midpoint of reflecting surface। तो reflecting surface का जो midpoint है, that is called pole, yeah, it is the midpoint of spherical mirror, concave or convex, okay। So note it down। And here P is there, so it is represented by P से represent करते हैं, okay। Any problem here? No। So now after that next point, और next point की तरफ चले हम, तो देखिए next point में क्या आएगा हमारा। So ये जो लाइन ज्वाइन कर रखा हमने P and C को, it is not only the radius, so it is called here axis, this is axis, इसको हम डार्क कर देते हैं।
So ये जो line है, this is called axis. इसको ऐसे पास होके जा सकते जाएगा. So a line joining the center of the sphere and pole is known as principal axis. Principal axis. तो ये principal axis है. Objects are placed on principal axis. जब हम इनका image ray diagram बनाएंगे, object को कहाँ रखना है, तब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, right? So here it is principal axis. Principal axis में क्या होगा? May I have it? Okay. तो इसको रब कर देते हैं. So now next is principal axis. So write down in the notebook principal axis. So this is the now principal axis. Fourth point is principal axis. So generally mistake is done by the students here writing this. They write principal, PLE. That is principal. मुख्य अक्ष. हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष. Okay. So principal axis here it is PC. जो लाइन जाएगी PC से पास होकर. तो ये क्या होगा? It is a straight line. Straight line passing through, yes, passing through pole and passing through POLE, pole and center of curvature. Center of curvature. Okay. So ये जो straight line है, वो चाहे convex mirror हो, चाहे concave mirror हो. Definition ये जब सब points थी, these terms will remain same for both mirror. So it is a straight line joining the pole and center of curvature. तो center of curvature से जो line pass होके जाएगी, उसको join कर रही है, तो this is called principal axis, and it is again very very important. It is imaginary line. मिरर के लिए इमेजिनरी लाइन कहते हैं, कोई एक्चुअल में नहीं है. अगर हम जब आपको मिरर दिखा रहे हैं तो उसमें कोई लाइन दिखाई नहीं दे रही, यहाँ से सेंटर से पास हो जा रही है. इट इज इमेजिनरी लाइन. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, सो नोट इट डाउन. एंड नाउ आफ्टर दैट next point is aperture. And aperture is a very common word. While using cameras, you must have heard about this aperture. Aperture कम कर दो, aperture ज्यादा कर दो, right? So रोशनी ज्यादा आ रही है, रोशनी को कम करना है. So aperture is a common word which we hear in daily life when we use camera. So aperture how aperture is related to the spherical mirror. Spherical mirror. Aperture इसमें क्या होता है? It is also important point here. So aperture क्या? It is a reflecting surface. ओके, वो मिरर का, स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, जिस पर लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है. तो दैट इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो हियर यू कैन जस्ट हैव अ लुक एंड जस्ट हेल्प मी कि इसमें एपर्चर क्या होगा, जरा देखिए. यस, so we can say here A P B. So reflection जो है हमारा यहाँ से हो रहा है, A P B पार्ट से, this इतना पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है. इसमें रिफ्लेक्शन यहाँ से पॉलिश है, तो इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम हियर. यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग. सो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर आल्सो. Okay, it is diameter also of spherical mirror. So it is called aperture. Aperture क्या? It is the diameter of the convex mirror or concave mirror, or it is the diameter of the spherical mirror, or we can say that it is the reflecting surface. Okay, part of the mirror which is reflecting the light falling on it. So it is called aperture. So just write down aperture. So here it is diameter of spherical mirror. Yes, spherical mirror. Okay, so note it down. Draw the diagram also. So here aperture is here A to B. This part is aperture. Okay, so I am writing here AB is aperture, A to B.
aperture of spherical mirror, right? A to B, A से B तक का जो पोर्शन है, इसको जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इट इज कॉल्ड aperture. Next, yes. Now next point is what happens in last session we discussed कि जब इस पर लाइट आती है, light rays are falling on it, a parallel narrow beam की बात करेंगे. Okay, why narrow word I am using here? I shall tell you. So parallel narrow beam of light is falling on it. We discussed in last session why do we call concave mirror, converging mirror, and convex mirror a diverging mirror. So हमने डिस्कस करा था. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम, दैट इज फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर. सो इफ यू हैव नोटेड देन आई एम गोइंग टू रब इट. चलिए इसको रब कर देते हैं. यस, परमिशन है. ओके, सो आई एम गोइंग टू रब इट. इसको इतना पोर्शन हमने रब कर दिया. एंड सेम वे हियर. ओके, ये हम रब कर देते हैं. एंड दिस पोर्शन इज आल्सो रब. इसको भी हमने रब कर दिया. अब हमारा एक्चुअली हमारे पास हमारे मिरर का शेप निकल के आ गया. एंड दिस इज आल्सो रब. चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं. अपना राइट ऑन फोकस. Which focus? Principal focus. So write down here principal focus. Here. So next term is here principal focus. It is L, F-O-C-U-S, and it is represented by capital M. हमने पहले लिख दिया capital M. So चलिए, तो देखिए इसमें ये P है. P is the pole of the mirror, and हमारा C था क्या? Center of curvature. So a line which is passing through the center of curvature and pole, ये हमने straight line draw कर दिया here. Yes. So this line is principal axis. ये भी हमने discuss करा. When a narrow beam of light is falling on it, the light rays are coming on it. इसमें से light rays आ रही हैं ये. So this and second ray is coming. Yeah, this. Okay. And ये जो rays होंगी after reflection, जब इस पर गिरेंगी ये, and this is the reflecting point, or we say point of incidence or reflecting point. Okay, point of reflection भी इसको कहते हैं. So this point on which this ray of light is falling, it is called point of incidence or point of reflection also. तो यहाँ से गिरेगा तो क्या होगा? It will reflect. It will be reflected. जब ये reflect होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये इधर आएगा. ओके, एंड देन ये देखिए इस पर आके इस पर कहीं मिलेगा आकर, यहां से पास होगी. सो ये है ऐसे आ रहा है. एंड इट इज सी को हम यहां लिख देते हैं. एंड इट इज गोइंग हियर स्टे. एंड सेम वे ये क्या होगा? यहां से ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो इट विल पास थ्रू दिस. इसमें से ये पास होके जाएगा ऐसे ये, राइट. सो दीज टू रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट on principal axis. This point is on principal axis. ये आपको याद रखना है कि principal axis पर होगा focus. Focus is on principal axis. So focus, this is the focus. So this is a point on principal axis where rays of light after reflection meet. In this case, concave mirror may actually meet. Here actually these are intersecting. Okay, and when we talk about the convex mirror, इसका भी diagram अभी पूरा करेंगे. तो उसमें देखेंगे क्या होता है. ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑन विच पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, कैसी रेज? विच आर नैरो. रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. हम व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द नैरो बीम ऑफ लाइट, एक्चुअल डिस्कस. सो दिस नैरो बीम ऑफ लाइट मीटिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड फोकस. तो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम्स. और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये अभी हमने बोला था कि आगे पढ़ते रहेंगे आप. So now its definition, write down. It is the point on principal axis. Principal axis. So here I am underlining this. इसको हम underline कर देते हैं कि आपको ये याद रहेगा. It is the line. It is the point on principal axis where
rays of light parallel to each other or parallel to principal axis after reflection क्या करेंगी? Actually meet. Here I am writing two words, actually meet or appear to meet. So I am writing with red here. Actually meet or appear to meet. Okay. So it is the point on principal axis where rays of light parallel to each other or parallel to principal axis after reflection actually meet or appear to meet. Is called focus. Or principal focus. So here appear to meet, it is in case of convex mirror. तो इसका डायग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं. So I'm sure you must have understood, and it is denoted by F. तो ये ध्यान रखेंगे, this point is on principal axis. चाहे रेज अभी एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सन से ऐसे पैरेलल आ रही है, तब ये मीट करेंगी फोकस पर. Here I have taken the rays parallel to principal axis. और सन से जो रेज आएंगी वो पैरेलल ऐसे आएंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं होती है. ओके, सो नोट इट डाउन, देन आई एम गोइंग टू रब इट एंड सेकंड डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ. And C is here. We can take C is here. Okay, may I rub it now? Yes, students are giving permission, तो I am rubbing it. इसको रब कर रहे हैं हम. चलिए. इसको रब करते हैं और दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं. चलिए, देखिए, इस केस में दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर, एंड ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ऐसे ही ये. ओके, सो हियर रेज आर कमिंग पैरेलल. वही हमने रेज लिया. देखिए, दीज रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये. ओके, एंड इसमें देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएगा, और ये रे जो है हमारा इधर से आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो लाइक दिस. अब ये क्या लग रहा है कि these two rays are coming from a point behind the mirror. लगता है कि behind the mirror कोई पॉइंट है, वहां से ये रेज आ रही है. This ray and this ray, these two reflecting ray appear to be coming from a point behind the mirror. तो इसको हमने एक्सटेंड करा, एंड इसको भी एक्सटेंड करा. ओके, तो ये जो पॉइंट देखिए, अगेन दिस पॉइंट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ये पॉइंट फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. सो दिस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस. ओके, इन दिस केस इन कॉन्वेक्स मिरर फोकस इज बिहाइंड द मिरर, and in concave mirror you have seen focus is in front of the mirror. तो अगर याद करें हम रियल और वर्चुअल इमेज की, which we have discussed earlier, so you will remember. So it will form which kind of image? Yes, virtual. Some of you are writing in the chat comment box virtual. तो ये जो बनाएगा इसमें, तो nature of image, the nature of image in convex mirror. In convex mirror is virtual. ये आप याद रखेंगे यहाँ पर, virtual. And the focus is behind the mirror. Okay, so this is behind the mirror. ये दो important point है. These are two important points. Okay, so behind the mirror होगा focus, and image कैसा होगा? Virtual होगा. And if we talk about the concave mirror, so ये आपका convex हो गया. concave mirror के केस में, तो nature of image, देखिए, nature of image
In case of concave mirror, ये क्या होगा? Real. And number 2, focus is in front of the mirror. Okay, this is the difference. लेकिन ये हो गया हमारा concave mirror का केस, and this is for convex mirror. This is for concave mirror. But ये जो मिरर है, ये एक concave mirror is the only mirror which can form both kind of images, virtual as well as real. तो ये बहुत important point है, इसको आप याद करके रखेंगे. This is very very important point, very very important point. So concave mirror is the only mirror which can form both kind of images, real as well as virtual, depending upon the position of object. What I am saying, depending upon the position of the object. ये आप डिटेल में देखेंगे जब हम नेक्स्ट सेशंस लेंगे. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट का. इट गिव्स यू वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, नॉट ओनली इन 10th क्लास. इट इज इंपॉर्टेंट इन क्लास 12 टू. So therefore do it very seriously, because you are studying for knowledge, not to get marks. Okay, जनरली कहा जाता है कि नंबर लाओ. तो नंबर एक लिमिटेड सिलेबस में से होते हैं, एंड नॉलेज की जो बात कर रहे हैं दैट इज वाइड. सो यू आर वर्किंग फॉर वाइड, यू आर स्टडिंग फॉर वाइड. सो इट इज इम्पोर्टेंट. ये हमने अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, इट कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ये हम लिख देते हैं, चलिए अगर आपको याद ना रहे. So depending upon position of object. Okay, याद रहेगा. नोट्स में भी मिल जाएगा आपको, नोट्स में भी इसको देंगे हम, और यहां भी आप साथ साथ देखते रहेंगे. ओके, और समझते रहेंगे. So again these 2 points repeating are important. ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देख लीजिए इसको और ड्रॉ कर लीजिए. नाउ सर व्हाट डू वी कॉल दिस पीएफ, इसको क्या कहेंगे? सो पीएफ इज हियर. ये जो पीएफ है इसको क्या कहेंगे? दिस इज फोकस, दिस इज पोल, तो दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ओके, फोकल लेंथ. तो मे रब इट नाउ. ओके, इसको रब कर देते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म. फोकल लेंथ. सो प्रिंसिपल फोकस के बाद में हमारा आ जाता है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. फोकस कैपिटल एफ एंड फोकल लेंथ स्मॉल एफ. सो फोकल लेंथ क्या है देखिए, तो पी एफ, ये पी एफ जो है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, it is the distance between pole and principal focus. Okay, so it is the distance between pole and principal focus. So ये pole underline कर दिया हमने, principal focus को underline कर दिया. So here focal length is focal length PF. It is represented by small f. Focal length PF is represented by small f. So you can see here, इसका जो focal length है ये behind the mirror. This is convex mirror. तो convex mirror में behind the mirror. अगर हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं किसका? concave mirror का. So concave mirror का देखिए हमने डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था. ऐसे हमने ऊपर नीचे इक्वल एरिया नोटबुक्स में. If you take 7 lines, so 3 आप ऊपर ले सकते हैं, 3 lines below. Again note it down. एग्जाम में जरूरी नहीं कि स्केल भूल गए आपके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्केल नहीं है, बोरो हमें करना नहीं है. So if 7 lines, you take 7 lines, तो 7 में 3 ऊपर ले लीजिए, 3 नीचे, और एक में 7th वाला होगा बीच में आ गया. तो 3 lines ऊपर हमने और ये 3 नीचे से डॉटेड कर दिया. Then take a point here, then join it very nicely, join it. तो देखिए सुंदर सा हमारा कॉनकेव मिरर बन गया. सो नो नीड टू गेट डिस्टर्ब इन एग्जाम्स. ओके, दिस इज
pole, and here rays of light are going parallel to each other, and here parallel to each other, and this is, and ये लाइन हमने अभी आपको नहीं बताया कि ये जब सीधा ray of light which is going along the principal axis, it is reflected back, ये ऐसे ही वापस आ जाती है, it comes back, ये ऐसे ही वापस आती है, जैसे ये जो डायरी है ये वापस आती है. Why it comes back? Because it is falling. Yes, any one of you? Yes, it is falling normally. It is falling normally along the principal axis. So principal axis के along गिर रही है, ये falling normally. So it is coming back. In plane mirror we have done. So when a ray of light is falling normally, it comes back along the same path. तो इसलिए देखिए ये भी वापस आती है ऐसे ही, ये भी यहाँ पर वैसे ही आ रही है. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ये नहीं बताया कि इसके along क्या होगा. So just I was waiting that how many of you are curious to know it. Okay. So now here, so this point, these rays are meeting at this point, and these rays are meeting at this point. So here principal focus is F, and PF is the focal length. This is the focal length. So यहाँ पर एक focal length PF है देखिए, okay, and it is represented by small f. So here you can see focal length is just in front of the mirror. तो इसमें क्या होगा? It is positive. ये हम डिस्कस करेंगे. And here focal length is negative. तो focal length of convex lens is convex lens is negative or positive? कुछ बच्चों को याद होगा. Yes, it is positive here, and it is negative here. It is negative here. Okay. कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ने यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिया नेगेटिव. Just to check your knowledge. So focal length F हो गया, PF is a focal length, and here PF is a focal length. It is behind the mirror and it is in front of the mirror in case of concave mirror. इसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन क्या है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का, एंड उसके बाद में हम आपको 2 दिन क्वेश्चंस देंगे. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, I should like to ask 2 questions to all of you, and I'm sure all of you will be able to give answers. Okay, I'm taking my marker. Now I'm going to use blue marker. Okay, so here the focus is in convex mirror, focus is behind the mirror, and here in concave mirror, focus is in front of mirror, right? So this focus is real or virtual? Yes, Priyanka is giving answer. I can see in the chat box. She is saying it is virtual focus. Okay, rays of light appear to be coming from the point. It is behind the mirror. So it has virtual focus. And here rays of light are actually meeting in concave mirror. So it is real focus. It is real focus. So this is again important point. And while solving numericals, it is very, very important to remember that focal length should be positive or negative while using mirror. Which mirror we are using? Convex mirror is being used or concave mirror is used? Then what is the focal length here? It is positive or negative in case of convex or concave. So remember these points are very, very important. Now now I am going to start relation between radius of curvature and focal length. So I am rubbing it, and all of you have noted. So radius of curvature. Radius of curvature is represented by capital R. It is represented by capital R, and focal length is represented by small r. So now note down this relationship. So I am writing heading here. Relation. So blue is not working. Okay. I am coming to red again. So relation between, write down heading, between radius of curvature, and focal length. Okay. So here just you have to remember relation. It's not in board that you are asked to find out the relationship between F and R, focal length and radius of curvature. Just you have to remember. And how important it is, just I tell you,
that it helps you to draw the perfect ray diagram, not diagrams, ray diagram. And you will find, if you just understand the relationship, if you know how to find focal length from radius of curvature, and then you will draw the diagram without erasing them. Perfect diagrams you can draw. Okay, so relationship is this: R is here, radius of curvature, and F is focal length. So R is radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature. So remember here. And here F is focal length. Right? So the relation is F is equal to R upon 2. This is important relation. F is equal to R upon 2. So this is the relationship. F is equal to R upon 2. If radius of curvature is 6 centimeter, focal length will be 3 centimeter. Now, if you are asked, radius of curvature of concave mirror is 6 centimeter. Concave mirror is 6 centimeter. Then focal length will be 3 or minus 3. Yes. Now, Abhinav is writing in the chat box. I can see he is saying minus 3. Yes, it is concave mirror. So, if radius of curvature of concave mirror is 6, its focal length will be minus. It will be minus 3. So, this is important to remember. Okay, today up to this, and in next session, I shall be discussing one more important point that is in not in class 10, but it is very, very important for class 10 students for competitive exams. Okay, and why we talk about the mirror of small aperture? Why don't we talk about the mirror of large aperture? इसको हम discuss नहीं करते. Small aperture should be there of a mirror. And when we talk about the beam of light, so narrow beam of light, rays of light should be very close to each other, not very broad beam of light. So this we shall be discussing in next session. And now, at last, if I ask you, I am taking my mirror. This is concave mirror. Activity I shall show you in next session. One day I shall plan activities only. So can I reduce its aperture? Can I decrease its aperture? Huh? Yes, Nishra is writing yes. How can we reduce? So I am showing you activity. So this paper piece I have cut and I am going to keep it on this. You can see. Now aperture has decreased. The reflection is taking place from small part here, from this part. Because the rest of the part is covered with black. So reflection will not take place from black portion. Reflection will take place from this portion only. So now you can see this is the diameter. Inner is the diameter of the mirror. So in the when we were discussing aperture, I told you diameter of the reflecting surface is known as aperture. So now aperture has reduced. Aperture has reduced. Okay, so this is very, very important. So you have to just think, you have to be innovative. Then how to first get questions, try to be your own teacher. First ask question to yourself, then try to answer. If you are not able to answer the question, then write in the chat box. I am here to help all of you. Okay, now question session. I am going to rub it now, writing some questions on the board. And these questions will be available in Google Form also. And along with this, again, you will be getting notes of the topics which we have covered. And in the previous sessions, some questions were given. I am sure all of you must have done. And write down after seeing this video, and then I shall see. Okay, now write down questions. So the first question is number one. If radius of curvature of convex mirror, I am talking about here, convex mirror is
8 centimeter. It is 8 centimeter. Then find its focal length. Focal length. Question number 2. If focal length of concave mirror is 5 centimeter, find its radius of curvature. Radius of curvature. Now, number 3. Can we reduce the aperture of a spherical mirror? Spherical mirror. Can we reduce the aperture of a spherical mirror? If yes, then justify your answer. आप करके आपको उसको दिखाएंगे. With the help of diagram also you can show. And it is really a different question. You will not find in books. Justify your answer. Your answer. And it is sure that I shall be giving you questions and notes, and these will not only help you to get good marks, will help you to get knowledge also. Knowledge also. Number 4. Number 4 question is describe with the help of diagram. Number 1, pole of a spherical mirror. Spherical mirror. Here, when we are writing a spherical mirror, so you can take any mirror. You can take concave mirror or convex mirror, any mirror. Now, second part here, focal length of convex mirror and not focal length, take focus. Principal focus. Okay. Principal focus. Second is principal focus. Here I am writing spaceless, but ho jayega kaam. Focus of convex mirror and concave mirror. Okay. Also draw ray diagram. So here I have written ray. So when ray is there, direction will be there. If you don't show the direction in exams, then half mark must be deducted and are deducted in good schools. Half marks are deducted. अच्छे स्कूलों में आधा नंबर डायरेक्शन ना छोड़ के काटे जाते हैं कि जिससे आपकी आदतें खराब ना हो. रे लगनी चाहिए रे. It should not be a line segment. Okay. So here now last question 5. What should be the 5th question? So 5th question is yes anyone? 5th question हम देखें इसे रेडियस के बीच हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये हो गया. Now 5th question is describe. No, एक और अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं. Will the focal length of spherical mirror
spherical mirror change on immersing in water. Immersing in water, I am writing S2. Yes or no? Yes or no? So this is very different question. ये भी एक अलग क्वेश्चन कहोगे कि सर हमारे को तो ये कराया नहीं गया है, कैसे करेंगे ये? तो we have discussed everything. Try to write down answer on your own and don't take help of anyone. Try to write down. We shall discuss. And we have discussed each and every point, and therefore I'm sure that all of you will be getting answers of the questions from the part discussed, for the terms discussed, for the from the content discussed. So, and if you like the session, do share, because in previous session I told you sharing is knowledge. First acquire knowledge, then share it. So, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, क्योंकि हमें हेल्प हर एक की करनी चाहिए. Every child is future stakeholder of this country. इस देश को भविष्य बनाने वालों में से है. So do help your friends by sharing this content. Thank you very much. God bless you all.